A very warm good afternoon to everyone, to all the viewers. Today, we will be discussing a very important topic that is diabetes and heart. So, to discuss this, we have four panelists from different parts of our nation, and I want to welcome our panelists. So, we have with us, first of all, Dr. Ashok Krishna Bhuya. He is an associate professor, Guwahati Medical College and Hospital, Guwahati. Welcome, sir. Hello, good afternoon, Ava. Hello, everyone. Good afternoon, sir. So, our next panelist is Dr. Beatrice Annie. She is an associate professor and head of department of Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. Welcome, madam. Yeah, good evening, everyone. We also have Dr. Mohan T. Shinoy. Sir is a consultant endocrinologist from Sri Gokulam Medical Science Medical College and Research Institute from Trivandrum. Welcome, Hello, sir. hi everybody. Thank you. And our fourth panelist is Dr. Lakshmi Nalini Kopale. She is a consultant endocrinologist from Fernandez and Continental Hospital, Hyderabad. Welcome, madam. Welcome, all of you. Good evening, everyone. Good evening. So this week, ESI is going to discuss about the different types of disorders and the effect on heart. So for today's evening, we have a very important topic that is diabetes and its impact on the heart. So my first question to our first panelist, Dr. Ashok Krishna Bhuya, is that, sir, what are the heart diseases caused by diabetes mellitus? Over to you, sir. Thank you, Ava, for a nice question. So, when we talk about the different heart diseases which can be there in a patient with diabetes, generally we talk of type 2 diabetes because 90% of our patients are generally type 2 diabetes. And it may affect different structures of the heart. It may affect the vessels which supply the circulation, which supply blood to the heart. It may affect the nerves which supply the heart. And it may also affect the muscles or the cardiac myocytes. So broadly, if we call it as a scientific term, it may be a coronary artery disease, which involves the vasculature. It may be a cardiac autonomic neuropathy, although it is less discussed. It is one of the commonest cause of morbidity and mortality, which affects the nerves supplying the heart, and the other is the cardiomyopathy or the heart failure, which affects the heart muscles. So these are the different spectrum of heart diseases which can be affected in type 2. But having said that, also, although we are not discussing about the heart diseases which are there in type 1 diabetes, it has also been seen that by the age of 55 or 60, the chances of heart diseases in type 1 diabetes also increases by 3 to 4%, 3 to 4 times as like patients with type 2 diabetes. So we should also give emphasis to patients of type 1 diabetes, especially who are beyond 40, because they are also having equal chance of developing heart disease in diabetes. Thank you. Thank you, sir. So, heart diseases, it is not only the heart muscle, it is also the neuropathy of the heart that can lead to a number of problems. And there are also a lot of atherosclerotic problems that do come. And both type 1 diabetes and type 2 diabetes can lead to heart problems in future. So, my next question to Beatrice ma'am is, when does heart problems start in diabetes? A very interesting question, Dr. Abba, because there is no particular sugar level at which the heart disease starts, because it is a risk continuum. So higher the sugars, higher the risk. And many a times we see people coming to us for the first time with a heart attack or a stroke, and then they are being diagnosed with diabetes. So in fact, there is no way to know when the diabetes has started unless we regularly get screened for diabetes. And because this is important, because the longer the body is exposed to increased sugar levels, the higher the damage to the heart and the blood vessels, and higher is the risk of developing a heart attack or a stroke. And if you look at it, this increased risk of developing heart disease is present in those with diabetes, not only because of the increased sugar, but also because of the clustering of the risk factors for heart disease. So a person with diabetes could also be having increased blood pressure, could be having increased cholesterol levels, especially the bad cholesterol or the LDL cholesterol. The person could be overweight or obese. A person could be having other risk factors like smoking. So all these risk factors are clustered together, and they are all responsible for developing heart disease.
सो मैडम ये आपसे हमें ये बहुत अच्छे से जानने को मिला है कि जो हार्ट प्रॉब्लम्स है वो डायबिटीज जब डायग्नोसिस होता है उसके पहले भी हो सकता है, जब पेशेंट को डायबिटीज होता है तभी भी हमको हार्ट डिजीज मिल सकता है, और कुछ सालों के बाद या बहुत सालों के बाद भी मिल सकता है। लेकिन ब्लड शुगर अगर किसी का अनकंट्रोल्ड रहेगा या बहुत हाई रहेगा तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। Thank you, madam. So moving on to the next question to Dr. Mohan. How to prevent cardiac disease in diabetes mellitus? Yeah, thank you, Abha, for that question. And I really thank the ESI and USP for giving me the opportunity to be here in this moment today with my friends. So, abhi jo bol raha hai, because there are so many targets to manage in diabetes. So, we know diabetes is no longer one single player disease. जो हम बात में कर रहे हैं, बिकॉज डायबिटीज में पैंक्रियाज का बीमारी बोल सकते थे पहले, वे इंसुलिन ही था पहले अवेलेबिलिटी में, जबकि लास्ट 100 इयर्स में इंसुलिन के बगैर बहुत ज्यादा मेडिसिन भी आ गए हैं। सो अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो बंद कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं कार्डियक डिसीज को, अभी HbA1c is a reflection of the last 3 months glucose control. तो ग्लूकोज को कंट्रोल में रखने के लिए HbA1c should be kept below 7%, ideally speaking. ब्लड प्रेशर को should be better in target. ब्लड प्रेशर को भी एक टारगेट होता है, वो 120/80 के अंदर होना चाहिए, वो कि नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल बट कर सकते हैं, जबकि वो सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करने से वो कर सकते हैं। और तीसरे जो है C फॉर कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन खाने का जरूरत नहीं है, और उसका फूड में जो चेंजेस करते हैं वो उसमें कोलेस्ट्रॉल को हम काबू में कर सकते हैं। और D stands for डाइट एंड अदर मेडिसिन। सो मेडिसिन के लिए ड्रग्स एंड डाइट, उसके लिए हमको वी शुड मीट द प्रोफेशनल पीपल। सो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, और एनीबडी इन फिजियोथेरेपी और एनी एक्सरसाइज के लोग, वो E होता है। तो वी कॉल इट ABCD अप्रोच। A फॉर HbA1c कंट्रोल में रखने का, B फॉर बॉडी वेट एंड ऑल्सो द ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने का, C वो कोलेस्ट्रॉल को काबू में आने के लिए, D फॉर डाइट एंड ड्रग्स। और उसके बजाय भी वी कैन नोट जेनेटिक्स में फैक्टर होता है, बिकॉज इवन वी हैव कंट्रोल्ड ABCDE। F stands for family। फैमिली को, इफ यू हैव एनीबडी इन द फैमिली हैविंग हार्ट डिसीज, हम डायबिटीज को काबू में रखने के बाद भी हमको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, तो फैमिलियल को स्क्रीन करना पड़ेगा। वी शुड डू समटाइम्स एन एको और सम अदर टेस्ट एनुअली, वैसे में हमको डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है। लास्टली जेनेटिक्स for family होता है। We are seeing so many people who are brought to us who have done so much activity and still they are found to have a heart problem or physical activity। जो हमारे फिल्म स्टार्स होते हैं, तो हम we have seen so many people in the last 2 years। तो वो immunology और genetics वो लास्ट होता है, because we know COVID also is still around us। So उसको भी we have to be understanding the immunology। So we are not sure which is the right way to go about it। So एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को, डायबिटीज को डॉक्टर को मिल सकते हैं, तो वो डिस्कस करने के बाद हमको मालूम होता है। आई होप द आंसर इज क्लियर। थैंक यू। थैंक यू, वेरी वेल समराइज सर। सो डायबिटीज में हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने का उपाय यही है कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखे, अपना कोलेस्ट्रॉल और जो भी आपका डिसलिपिडीमिया है उसको कंट्रोल में रखे, अपना डाइट एक्सरसाइज मेंटेन रखे, अपना ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रखे, और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है वो तुरंत ही अगर डायबिटीज नहीं भी है या प्री डायबिटिक है तभी भी अपनी जांच करा ले फॉर एनी हायर रिस्क फॉर डायबिटीज। एंड यस ऑफ कोर्स अपना स्मोकिंग ये सब अवॉइड करना बहुत जरूरी है। So my next question to Dr. Nalini ma'am is, what are the common symptoms of heart disease in diabetes mellitus? वेरी गुड क्वेश्चन आभा। सिम्टम पता होंगे तभी तो हम कुछ कर सकेंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? ये सिम्टम्स 4 प्रकार में या 4 विभाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला है पेन, दर्द। ये दर्द कहाँ कहाँ हो सकता है और हमको कार्डियक का है बोलकर डाउट कब आएगा? इफ इट इज अ चेस्ट पेन, जो हम एंजाइना बोलते हैं टेक्निकली, चेस्ट पेन हो, सो दैट कैन बी अ सिम्टम। और द पेन इज इन द जॉ के पास जब पेन होता है, दैट कैन ऑल्सो बी कार्डियक पेन। एंड अगर ये लेफ्ट शोल्डर ब्लेड या शोल्डर की तरफ जा रहा है, या इंफ्रास्कैपुलर माने अपर बैक की तरफ जो जा रहा है लेफ्ट साइड में, वो भी पेन कार्डियक पेन हो सकता है।
और अपर एब्डोमिनल पेन कैन ऑल्सो बी कार्डियक पेन। सो दर्द जो हम देखते हैं ये हिस्सों में कॉमनली कार्डियक पेन हो सकता है। अगर ये हिस्सों में दर्द आ रहा है तो पहचाने के ये शायद कार्डियक हो सकता है और जांच तुरंत करवाएं। और सेकंड कैटेगरी है पल्स और ब्रीदिंग की। अगर ब्रेथलेसनेस होता है, माने सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत, और छोटे छोटे कामों में भी, ये कमरे से वो कमरे जाने में या इतने छोटे काम में भी अगर तकलीफ होती है तो वो मिनिमल एक्टिविटी ब्रेथलेसनेस एक इंडिकेटर है। दूसरी चीज, अगर हम बैठे रहते हैं और सांस फूलते रहती है तो ब्रेथलेसनेस आती है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। और सोते समय ब्रेथलेसनेस होती है तभी भी हमको आगाह होना चाहिए कि ये शायद कार्डियक रिलेटेड सिम्टम है। और ब्रेथलेसनेस के साथ में हमने क्या बोला, पल्स। सो पल्स मतलब अपना हार्ट रेट इधर बहुत स्लो हो रहा है या बहुत ही फास्ट हो रहा है। अगर फास्ट हो रहा है तो सीने में एकदम फ्लटर की तरह महसूस हो जाता है, तो ऐसे कुछ हो रहा है तो पहचानिए। यह है फर्स्ट कैटेगरी वाज पेन, सेकंड कैटेगरी वाज पल्स एंड ब्रीदिंग। थर्ड कैटेगरी इज अदर सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स क्या है? बिकॉज पल्स अगर बहुत ही रैपिड हो रहा है तो ब्लड फ्लो सही नहीं चल रहा है। ब्लड फ्लो सही नहीं चल रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही थकान महसूस होती है, एकदम से फेंटिंग सेंसेशन हो जाती है या नियर फेंटिंग एपिसोड्स होते हैं, तो वो भी सिम्टम्स कार्डियक के हो सकते हैं। तो हमने एक बोल दिया पेन, दूसरा बोल दिया पल्स एंड ब्रीदिंग, तीसरा बोल दिया अदर सिम्टम्स, फिर चौथा क्या है? चौथा इज साइलेंट डिजीज। डायबिटीज में हार्ट डिजीज साइलेंटली भी आ सकता है, क्योंकि ये पेन वाले जो नर्व्स होते हैं अगर वो सही नहीं काम करते हैं तो उसके वजह से जो हार्ट का पेन है वो महसूस नहीं होता है और उसके वजह से साइलेंटली कार्डियक डिजीज होता है। तो शुगर कंट्रोल अच्छे से रखें, जो भी डॉक्टर मोहन ने समझाया वैसे वो सारे चीजें करें ताकि आप प्रिवेंट कर सको। अगर प्रिवेंट नहीं हो पाता है, सिम्टम्स आते हैं, तो सिम्टम्स को पहचानो एंड एक्ट इमीडिएटली। आई होप दैट हेल्प्स आभा। यस यस, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया मैडम। सो अपना कहीं पे भी जैसे जैसे मैडम ने बोला है कि जिन जिन जगहों पे अगर आपको पेन होता है, कभी चेस्ट पेन, कभी बहुत बारी होता है कि अगर अपर एब्डोमेन में पेन होता है या शोल्डर पेन होता है, बहुत बारी पेशेंट इग्नोर कर देता है या गैस्ट्राइटिस को समझ के वो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें वो इग्नोर नहीं करना है। बहुत बारी अगर रिस्क फैक्टर है तो अगर ये परसिस्टेंट है और आपको साथ में सांस लेने की भी तकलीफ है, पल्स में प्रॉब्लम है, जैसे जैसे मैम ने बोला है, वो सब अगर आपको सिम्टम्स है तो डेफिनेटली अपने जांच हार्ट डिजीज के लिए करा ले। और यस, अगर आपको साथ में पैर की सूजन है, मुंह में सूजन है, स्वेलिंग वगैरह है, तो आपको जरूर ही एक कार्डियोलॉजी से अपना हार्ट का जांच करा लेना चाहिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर अशोक सर इज, so if the heart problem in diabetes treatable and if they need surgery, sorry, sir. The question to you is, how to know if a person with diabetes has developed heart disease? थैंक यू आभा। आई थिंक ये जो आपने क्वेश्चन पूछा पहले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा तो डिफरेंट आंसर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जिनको पता होगा, जिनको सिम्टम्स डेवलप होगा, जो हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक हार्ट डिजीज, जैसे डॉक्टर नलिनी ने बताया कि पेशेंट में कम विद चेस्ट पेन और समटाइम्स मे नॉट बी चेस्ट पेन, हैवीनेस, थोड़ा सा प्रेशर जैसा लगता है छाती के ऊपर, डेफिनेटली नॉट एग्जैक्ट पेन, but heaviness in the sense that should not also be overlooked. And sometimes referred pain like jaw pain, then your lower back में pain. One important thing is पाव फूलना बिना कारण के। आपने देख लिया किडनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको हाइपोथायरॉइड नहीं है, आपको लिवर डिजीज नहीं है, फिर भी आपका पाव फूलता रहता है, दैट मे बी ऑल्सो ए अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर। तो वो भी एक देता है। और एक है रेस्टिंग टैकीकार्डिया, आपका जो हार्ट रेट आपको खुद महसूस होना, धक धक महसूस होना, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। तो जो जिसको लक्षण है उसमें तो बहुत आसान है आपको कि पेशेंट को खुद ही प्रॉब्लम हो गया, वो आपके डॉक्टर के पास जाएगा, प्राइमरी फिजिशियन के पास जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अपने सिम्टम्स देख के आपने जांच करवाया और आ गया। लेकिन जो एसिम्टोमेटिक और सब क्लिनिकल हार्ट डिजीज वो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि उसको कैसे हम पता करें, क्योंकि अभी तक कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है कि एसिम्टोमेटिक हार्ट डिजीज में ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, सब कुछ आपका पकड़ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जैसे हमने पहले ही डिसाइड किया, प्रिवेंशन is the best modality to know when a person will develop heart disease. From the very first day a patient becomes diabetic, he is prone to develop heart disease. उसको आपको दिमाग में लेना है कि from the very first day you are at higher risk, 3 to 4 times of having a heart disease, 3 to 4 times higher risk of mortality of heart disease. So
एवरी 3 मंथ्स आप डॉक्टर के पास आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाओ, कोलेस्ट्रॉल 6 मंथ्सली एक बार टेस्ट कराओ, यूरिन प्रोटीन टेस्ट कराओ, बिकॉज यूरिन इन माइक्रोएल्बुमिन, दैट इज साइंटिफिक टर्म, और वो भी एक किडनी प्रॉब्लम भी एक हार्ट प्रॉब्लम के साथ इंटर रिलेटेड हो सकते हैं. So these tests should be routinely done, and BP control and cholesterol control should be done. And some non-invasive techniques which can give an idea, just a baseline ECG or a echo may be sufficient enough. But currently interventional screening का अभी तक कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कब स्टैंडर्ड में. अगर बेसलाइन ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम है या इको में कुछ प्रॉब्लम है, तो वी कैन गो फॉर स्ट्रेस इको या फिर अदर इंटरवेंशन. बट as of now, I'm not going to discuss this. I think these are the ways by which we can know that a person is developing heart disease. Thank you. यस सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट विद डायबिटीज को हार्ट डिजीज है कि नहीं. सो हम लोग अभी दूसरा अपना क्वेश्चन पे जाएंगे. सो इफ द my question to Dr. Beatrice ma'am, so if the heart problem in diabetes are treatable, will they need any surgery? Yes, again, a very interesting question, Dr. Abba, because the heart disease in diabetes is treatable to a certain extent, provided the golden hour is not missed. So when a person has any of the symptoms that Dr. Ashok and Dr. Nalini have been talking about, so say the patient has chest pain or uneasiness or fatigue, just not feeling well or breathing difficulty, an increase in the pulse rate. So it could mean that the patient could be having a heart attack, because heart attack is nothing but because there's a block in the blood vessel which is supplying blood to the heart muscle. So there is death of the heart muscle. So this is what is going to cause all these symptoms. So these kind of symptoms should prompt a person to reach the cardiologist as early as possible, who will then help to restore the circulation. So either by giving medicines to dissolve the blood clot or by placing a stent. So this helps to prevent the heart muscle from dying and to save whatever muscle that we can save. And in certain instances, when more number of vessels are involved, the cardiologist may also advise an open heart surgery. And unfortunately, like Dr. Nalini had mentioned, some of the people with diabetes may not develop the classic symptoms. So this is called as the silent heart attack. And this is more dangerous because we tend to miss the golden period then. And if unidentified, and if it is massive, it can even cost the person his or her own life. And in diabetes, because of the risk factors, it has been found that the severity of the disease is much more than in somebody who does not have diabetes. So it's always better to prevent than to cure the disease. So we have to take care of the risk factors, so namely the blood sugars, and now we have medications, blood sugar medications, which are also protective to the heart as well. And we have to take care of the blood pressure. We have to bring down the bad cholesterol. So like Dr. Mohan had mentioned, A, B, C. I will add one S also. So A for the A1C, so keep the blood sugar under control. B for the blood pressure, keep the blood pressure under control. C is for the cholesterol, bring down the bad cholesterol. And S is for stop smoking. And if you're not a smoker, don't start smoking. Yes, ma'am. So the second part of the question, would you like to answer, madam? Say, if the heart problems with diabetes, are they treatable with medicines, or does they need any surgical intervention? Because we are hearing lots of cardiac interventions now. There is cardiac stenting that are being done. So does everybody need a surgery, or are these things or these disorders or heart problems treatable with medicines as well? It depends on the number of blood vessels involved. So we have different blood vessels involved, and what is the percentage of the block, and what is the the blood vessels which are supplying. Whenever there is a block, there tends to be smaller blood vessels which form and try to save the muscle. So it depends on how many blood vessels are involved. And in diabetes, if you look at it, the number of blood vessels involved and the percentage of block tends to be higher than in somebody who does not have diabetes. So depending on the number of blood vessels involved, your cardiologist may advise an open heart surgery also. Thank you, ma'am. So moving on to my next question to Dr. Mohan. So how common is heart failure in diabetes? So thank you for that question again. So, so the audience may be wondering what endocrinologists are going to discuss about heart today.
because it's a very obvious question. हमारे पैनल में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, but we are not telling that you should not go to cardiologist. Because why I'm telling this is because 2007 onwards, so many studies have been done to explore the possibility between diabetes and heart. Cardiovascular outcome studies बहुत हो गया है, because हम अब जो आज बोल रहे हैं knowledge expand करने के लिए है. We are not here to scare anybody to tell that diabetes can affect the heart and everybody can go heart failure. So हमारा मकसद जो है प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक के लिए हमको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए. तो प्रिवेंटिव चेकअप्स के लिए भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का बहुत रोल है. तो आपका क्वेश्चन के लिए वापस जा रहा हूँ. सो हाउ कॉमन इज हार्ट फेलियर इन डायबिटीज? जब स्टडीज शुरू किया था, बिकॉज सो मेनी स्टडीज वर नॉट क्लियर हाउ मच इज द इंसिडेंस इन द प्रेवलेंस. सो up to 22% is there. It is unrecognized complication of diabetes mellitus. So अब diabetes को बोलते हैं शुगर की, just beyond sugar control, it is also having a disease which is having a obvious cardiac relation also. So अभी 22% बोल रहा, but I think unrecognized है, पहचानिए, इसलिए हमको जांच करना पड़ता है. So medicines अभी आ गए हैं to preventing heart failure also. तो डायबिटीज को काबू में रखने के लिए अब मेडिसिन भी है. वही मेडिसिन एक्चुअली हार्ट फेलियर प्रिवेंट करने के लिए भी करते हैं. तो हार्ट क्यों फेल होता है? हार्ट का पंप होता है, हार्ट का वैल्व है, पंप है. जैसे कि हमारे घर में होता है कुएं से या कोई पानी को पंप करने के लिए, ऐसे ही हमारे हार्ट को वेसल से हमको पेरिफेरी बाहर में हमारा जो इम्पोर्टेंट अवयव होता है उनके लिए पंप करने के लिए, हार्ट के लिए पंपिंग उसको बहुत ताकत होनी पड़ती है. तो पंप फेल जो होता है तो हमको सिस्टोलिक फेलियर बोलते हैं और डायस्टोलिक फेलियर बोलते हैं. तो डायबिटिक लोगों के लिए दोनों भी हो सकता है, जो पंपिंग के टाइम में भी और रिलैक्सेशन के टाइम पे भी फेल हो सकता है हार्ट. तो जो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो मेडिसिन के लिए हमको बहुत ज्यादा बीटा ब्लॉकर या दूसरा मेडिसिन होता है. जबकि लास्ट 10 ईयर्स में हमको SGLT2 नाम का मेडिसिन भी आ चुके हैं. मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, बट बहुत ज्यादा मेडिसिन है जो भी अभी जेनरिक भी जैसे बहुत कम कॉस्ट में भी आते हैं. तो वो मेडिसिन एक्चुअली कैन कंट्रोल द हार्ट एंड ऑल्सो कंट्रोल प्रिवेंट द डायबिटीज ऑल्सो, कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो. वेरी सेफ टू यूज एंड वी हैव टू बी वेरी मच स्क्रीनिंग देम फॉर अथेरोस्क्लेरोसिस ऑल्सो. हमारे लिए एक स्कोर होता है इसके लिए, अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज स्कोरिंग होता है, जो इट्स बियॉन्ड आवर टॉपिक टुडे. तो स्पष्ट रूप में बोलता हूं कि डायबिटीज में अनरिकग्नाइज्ड कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक फेलियर, और कार्डियक फेलियर प्रिवेंट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेडिसिन अभी आ चुके हैं. और फेलियर प्रिवेंट करने के बावजूद हमको ज्यादा टाइम भी उसको हमको चल सकते हैं. इंसुलिन भी अच्छा मेडिसिन है जो कंट्रोल द कॉम्प्लिकेशंस टू प्रिवेंट द कार्डियोवास्कुलर डिसीज प्रोग्रेशन. एंड डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी एक चीज है जो स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, जो हमारा घर में आर्किटेक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारा हार्ट का आर्किटेक्चर होता है, उसको भी अफेक्ट करता है और फंक्शन को भी, जो पंपिंग को भी अफेक्ट करता है. सो कार्डियोमायोपैथी इज वन थिंग व्हिच नीड्स टू बी नोन. हमको रेस्ट्रिक्शन भी होता है उसमें. So because Abha is not here, so I will continue with the discussion now. I will ask Dr. Nalini this question. So अभी मैंने बोल चुका हूँ कि हमारा के लिए बहुत स्ट्रक्चरल इश्यूज होता है. तो कितना कॉमन है हार्ट फेलियर के लिए, जो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के ऊपर में. तो वो क्वेश्चन है कि हमको क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है हार्ट फेलियर का, एंड व्हाट आर द प्रेसिपिटेशन कॉजेस फॉर दैट हार्ट फेलियर. डॉक्टर नलिनी. Thank you, Mohan, for that question. And I guess Abha is back. So, जैसे डॉक्टर मोहन ने बताया अभी हमको कि हार्ट एक पंप है, माने हार्ट अपना काम कर रहा है, दैट इज नॉर्मल. हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि हार्ट अपना बीटिंग बंद कर दिया, नहीं. हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट जितना काम करना है, जितने एफिशिएंसी से काम करना है, वो काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज हार्ट फेलियर. सो हार्ट का काम है ब्लड को हर जगह पहुंचाना, और ब्लड क्या ले जाता है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ले जाता है, ताकत ले जाता है. तो हार्ट अगर पंप नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से ब्लड दूसरी ऑर्गन्स को नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा फैटीग मिल रहा है. और ब्लड भी तो वापस हार्ट पे आना है, तो वही ब्लड को तो हार्ट पंप करेगा, है ना. तो जब ब्लड वापस नहीं आ रहा है हार्ट को ठीक से, हार्ट रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो बैक प्रेशर वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से ब्लड का फ्लूइड पार्ट एक्यूमुलेट हो जाता है. अगर ये एक्यूमुलेशन हो जाता है अपने फेफड़ों में, माने लंग्स में, उसके वजह से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है,
ब्रेथलेसनेस होती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ब्रेथलेसनेस मिनिमल एक्टिविटी की वजह से हो सकती है। पहली बात तो बहुत ज्यादा फैटीग है, उसके साथ में क्या हो रहा है, हार्ट अपना ब्लड बैक प्रेशर की वजह से लंग्स में फ्लूइड छोड़ रहा है, जिसकी वजह से सांस फूल रही है। सो ब्रेथलेसनेस विथ मिनिमल एक्सर्शन बोलते हैं। तो छोटा छोटा काम करते ही, छोटे छोटे काम करते ही ब्रेथलेसनेस हो सकता है। बैठे हो, आराम से बैठे हो, टीवी देख रहे हो, फिर भी ब्रेथलेसनेस हो सकता है। सो रहे हो, सोने से एकदम से नींद से जाग जाते हो और बहुत ही तकलीफ महसूस करते हो, सांस नहीं आ रही है, यू नॉट एबल टू ब्रीथ, वो भी एक बहुत ही अहम सिम्टम है हार्ट फेल्योर का। ये ब्रेथलेसनेस के बाद हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, लंग्स की तरफ सही नहीं हो पा रहा है। अब अगर यही बैक प्रेशर अपने पेरिफेरल वेजल्स की तरफ होता है, तो डिपेंडेंट एरियाज मतलब यूजुअली अपने पैरों में, फीट में, एडी में, लेग्स में, ये सारे जगहों पे फ्लूइड रह जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है। सो स्वेलिंग ऑफ द फीट इज ऑल्सो अनदर सिम्टम ऑफ हार्ट फेल्यूर। पहचानो, अगर एकदम से सूजन आ रही है पैरों में, तो हार्ट फेल्यूर शायद हो सकता है। साथ में डायबिटीज है तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्क है। डॉक्टर अशोक ने बताया है, डॉक्टर बियाट्रिस और मोहन ने भी दोहराया कि हार्ट फेल्यूर रिस्क है। तो ये रिस्क जो होता है उसको हम पहचानना चाहिए। और ये फर्स्ट 2 सिम्टम्स, 3 सिम्टम्स तो हमने देख लिया है। तीसरा सिम्टम है, अगर सोचो कि फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, फेफड़े क्या करेंगे, वो पानी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। सो क्या कैसे करेंगे, कॉफ से। परसिस्टेंट कॉफ रहेगा, खांसते जाओगे, कभी कभी स्पूटम व्हाइट या पिंकिश भी निकल सकता है, क्योंकि वो फ्लूइड ऑफ द ब्लड है, थोड़ा ब्लड भी रह सकता है। तो पिंकिश टेन परसिस्टेंट स्पूटम आर द सिम्टम्स। सो हार्ट फेल्यूर के सिम्टम्स, बहुत साल से डायबिटीज है और पैरों में सूजन देख रहे हो, डोंट टेक इट इजी। एकदम नींद से उठ रहे हो, किसी ने आपको लग रहा है कि बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शायद हार्ट फेल्योर है, वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। Does it help, Abha? You think our patients have understood heart failure के symptoms? You have explained so nicely. Everybody will understand. Yes, yes, very nicely. Yes, very nice, ma'am. So, जैसे कि मैडम ने बोला है कि हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या क्या है, और अगर बहुत ज्यादा खांसी है और पिंकिश कलर अगर आपको मतलब स्पूटम निकल रहा है, तो वो भी एक हार्ट फेलियर का सिम्टम है, और या तो फिर साइन है, तो वो नजरअंदाज नहीं करिए। बहुत खांसी हो रहा है, बहुत थकान हो रहा है, तो आप इसको नजरअंदाज नहीं करें। और बहुत बारी ऐसा होता है कि जैसे कि साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट माइकार्डियल इंफार्क्शन जैसे बोला है, कभी कभी आपको चेस्ट पेन नहीं होगा, लेकिन कभी भी आपको क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, या जैसे हाथ पैर फूलना, आंखों के चारों तरफ सूजन आना, मुंह फूल जाना। सो ये सब सब हार्ट फेलियर होने की रिस्क रहता है, या तो फिर सिम्टम्स बताया जाता है। और प्रेसिपिटेटिंग कॉजेस में बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग कॉजेस है। कैन यू मैम प्लीज समराइज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ हार्ट फेलियर? पेशेंट को कब सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर करे? सपोज एक पेशेंट है, हार्ट डिजीज है, उनको अचानक हार्ट फेलियर हो गया है, तो क्या होता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या क्या चीज वो हार्ट फेलियर एक पेशेंट में प्रेसिपिटेट कर सकता है हार्ट फेलियर विद अंडरलाइंग हार्ट डिजीज? इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझे कि ये अचानक सडनली नहीं आ जाता है। हम डायबिटीज और हार्ट फेल्योर की बात कर रहे हैं, बहुत ही दिनों से शुगर कंट्रोल नहीं है, और ऐसे इंसान में जिनको शुगर कंट्रोल नहीं है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन इज अ लोड ऑन द बॉडी, जिसकी वजह से हो सकता है। या सोचो कि ये डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो ब्लड वेजल्स जैसे ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर मोहन ने बताया कि ब्लड वेजल्स ब्लॉक हो गए हैं और हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो बस हार्ट का मेन हिस्सा होता है मायोकार्डियम, माने हार्ट का मसल पंप है, तो मसल की बहुत जरूरत होती है। अगर वो मसल एकदम से उसको खून नहीं मिलता है, उसको खुद ताकत नहीं मिलता है, वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक के सिचुएशन में फिर से हार्ट फेल्योर हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायबिटिक में हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक है सिस्टमिक इन्फेक्शंस, दूसरा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक है शुगर्स के रहते रहते और शुगर्स के साथ में बीपी भी रहता है, तो वो और एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में भी रहता है, तो वो भी एक चीज है जो कि हार्ट फेल्योर को प्रेसिपिटेट कर सकता है।
Does it help? अब आपने रीडर्स को समझ में, अपने दर्शकों को समझ में आया होगा कि हार्ट फेलियर Yes, एक yes, yes. रिस्क है और उसको समझना चाहिए, और डायबिटीज को आसानी से नहीं लेनी चाहिए, और हार्ट फेल्यूर Yes, एक madam. रिस्क है। छोटे छोटे चीजों में बस ऐसे ही जुगाड़ नहीं करने चाहिए, छोटे नुस्खे नहीं करने चाहिए, सिम्टम्स को समझना चाहिए, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि समझना शुगर चाहिए. एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और उसको सही तरीके से कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है, न सिर्फ अपने नंबरों के लिए बट अपने हार्ट के हेल्थ के लिए। I'll just add a Yes, ma'am. point, बिल्कुल Dr. सही Abha. कहा आपने. The और yes, sir. यस बी एन। Yeah, the commonest cause, in fact, will be respiratory infections because we see many patients nowadays coming with the viral infections, especially post-COVID. So we have many influenza and the COVID again. So those could be even precipitating factors for heart failure. And the other thing is we give them dietary recommendations. We say, a low salt diet. So those kind of recommendations also have to be followed strictly. And most important, that patient should take care is medications. So never stop the medications which the endocrinologist and the cardiologist have given them. So non-compliance to medication is also an important precipitating factor, which can be prevented. Yes, and we need to review those prescription Yes, ma'am. medications. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साल साल सही भर ले बोला रहे हो। आपने. हाँ. Yes, Abha, please continue. Yes, madam. So वो हर yes, बिल्कुल सही कहा मैडम. बेट्रिस. I think we have some connectivity issue for Abha. So Beatrice, that was a very pertinent point. We are seeing a lot of respiratory infections these days, and these respiratory infections are also posing keeping the people at a risk of developing heart failure. In addition to it, people have a lot of issues coming back to the doctor. They use the same medication for 1, 2, 3 years, and without going back to the doctor and reviewing those medications, do they need to change their prescription? So that should not happen. And especially when the risk of heart failure is increased, there are certain medications which should not be used in these individuals. Mohan, are you available? Can you unmute yourself, please? Yeah, this question is Dr. Ashok. Ashok. Yes. Hi. Yeah. So I think so we are having a discussion on the basics of endocrine aspects, heart and hormones के बारे में हम बोल चुके हैं. तो अभी हम लास्ट हाफ में जा रहे हैं. तो अशोक जी से मैं पूछना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, when should the diabetes patient visit a cardiologist? तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज हम कार्डियोलॉजिस्ट का चेकअप जो करते हैं आइदर इमरजेंसी में होता है या इलेक्टिव में कर सकते हैं. हमको ऑडियंस को जस्ट जानना चाहिए उस क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने का और कब हम रेफर कर सकते हैं. डॉक्टर अशोक, कैन यू हियर मी? Yeah, now I can hear you. The question is to you, when should the diabetes Hello? patient visit the cardiologist? You are not audible, Dr. Mohan. Okay, you answer the question which is told to you. No? When should the cardiologist be taking the patient? Am I audible, Dr. Ashok, to you? Yeah, you are audible. See, proactively, when would we refer the patient to a cardiologist? Many times when the patient goes in emergency or when somebody says or they are scared. But when should an endocrinologist refer the patient proactively to a cardiologist? Yeah, that's a very good question because with so much burden of diabetes in India and with the scarcity of cardiologists, we cannot refer each and every patient with a little suspicion of heart failure. No, so एक तो है आप कब सस्पेक्ट करोगे कि इसको बहुत ज्यादा हाई लाइक्लीहुड ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या हार्ट प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपको तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना ही है. One is that symptomatic patient, as you have all discussed earlier. Even a very minimal chest pain or pain in the epigastrium also, pain in the chest also, if there are definite ECG changes, we should not ignore it, thinking it to be like something gastritis, and immediately patient should be referred to a cardiologist. And if the patient is having breathlessness, सांस फूल रहा है ऊपर से और जो आपने बताया जो लक्षण है, उस टाइम पे तो आपको डेफिनेटली उस पेशेंट को कार्डियोलॉजी के पास तो रेफर करना ही है.
क्योंकि sometimes subclinical cardiac failure or incipient cardiac failure may be a long standing thing, as you have rightly said कि बहुत सालों से उसको एफर्ट इंटॉलरेंस हो रहा है, अभी कोई प्रेसिपिटेटिंग कॉज आ गया, सडनली एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, एनीमिया हो गया है, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उस टाइम पे आपको वो ज्यादा तुरंत प्रोग्रेस हो सकते, तो उस टाइम में आपको एक डेफिनेटली एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास उनको रेफर करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक है जो some other diseases which may be related to a heart disease, like if the patient is having some pain in the legs also, sometimes these are the spectrum of same diseases, like heart का vessels block होता है तो leg का भी vessels block हो सकता है, तो leg का vessels block होने का क्या सिम्टम हो सकता है, आपको बहुत दूर थोड़ी दूर चलने के बाद leg पे पेन होगा, रेस्ट लेने के बाद पेन में आराम मिलेगा, दैट इज नोन एज क्लोटिकेशन पेन, कभी कभी गैंग्रीन होना, ब्लैकनिंग ऑफ फिंगर्स होगा, that are also some features of cardiovascular disease that signifies that the patient may have blockage in the heart also. So these are the situations where you should have a very high index of suspicion that the patient is having cardiovascular disease. Again, one important cause is orthostatic hypotension. Suppose the patient को बिस्तर के उठने के बाद ही चक्कर आता है या खाने के बाद हाइपोटेंशन हो जाता है, that is postprandial hypotension. That is another feature of cardiac autonomic neuropathy, which may be detected only by sophisticated methods. So these are some definite situations where a patient should be referred to a cardiologist. And definitely heart attack हम जो बोले sudden onset cardiac pain उसमें तो भेजना ही है. Otherwise asymptomatic patient कार्डियोलॉजी में रेफर करना वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि इतना बर्डन है पेशेंट का और कार्डियोलॉजिस्ट का नंबर इतना कम है, फिर भी I would suggest, although nobody is recommending, that at least once yearly you should have a comprehensive health checkup. If you are diabetic, if you are hypertensive, if you are taking some medicine for cholesterol, you should have a comprehensive checkup just for primary prevention. जिसको हार्ट डिजीज ना हो उसको भी जाना है, और डेफिनेटली अगर कार्डियक डिजीज ऑलरेडी है तो पीरियडिकली 3 to 6 months को कार्डियोलॉजी के पास जाना ही है, क्योंकि जैसे आपने बताया मेडिकेशन सेम तो कंटिन्यू नहीं रहेगा, उनको चेंज करना है, डोजेज मॉडिफिकेशन होगा, कुछ ऑमिट करना होगा, कुछ ऐड करना होगा, तो ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो जाना ही है। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं भी है तब भी रूटीन चेकअप के लिए 6 monthly या 1 yearly जाओ, या फिर सिम्टम हो गया तुरंत जाओ। थैंक यू। Right. Yeah, so I suppose I can just take the next question also to Dr. Beatrice. Can you hear me, Dr. Beatrice? Yes, please. Yes, I can hear you. Okay. So the next question is to you. So just like Dr. Ashok has told already regarding when to refer or how to be thorough about it. So the continuing with that question. So does heart problems in diabetes link to other complications of diabetes? जो important है heart होता है macrovascular complication. So the audience also wants to know, does heart problem in diabetes have any link associated with other complications of diabetes, जैसे कि foot problems, जैसे कि nervous problems, जैसे कि kidney problems? So do you want to tell something about that? Yeah, so to understand this, we need to understand that there are two types of complications in diabetes. So one, like you said, is the macrovascular complication. So that is nothing but the larger blood vessels are affected. And there is microvascular complication, which is basically the smaller blood vessels are affected. And if you look at macrovascular complications, these are typically this coronary artery disease, that is blood vessels which supply the heart are affected. Or peripheral vascular disease, like Dr. Ashok had mentioned, there could be a disease of the vessels supplying the limbs. And this can cause cramps, and this can cause gangrene, and sometimes ulcers and amputations. And cerebrovascular disease, basically the blood vessels which supply the brain also can be affected, and this can lead to something called as a brain stroke, that we paralysis of the limbs. So these are all the macrovascular or complications which involve the larger vessels. Microvascular complications are complications which are going to affect the smaller vessels. So that is retinopathy, that is the inner lining of the eye is affected. Nephropathy, that is the diabetic kidney disease. And peripheral neuropathy, where the nerves get affected, and this can lead to burning sensation, loss of sensation in the limbs. So the macro and the microvascular complications are connected because they have common risk factors. So for microvascular complications, it is predominantly the blood sugar which matters. Whereas for the macrovascular complications, it is a combination of risk factors. So it is not only the blood sugar, but also the blood sugar, the blood pressure, and the cholesterol levels,
and smoking. So all this is going to affect the risk for developing the macrovascular complications. And since the disease process is the same, these risk factors, if these risk factors are not controlled, then the patient can develop a combination of these complications. So for example, somebody with diabetic kidney disease usually ends up with having diabetic retinopathy or eye disease as well. And when the patient starts losing protein in the urine, that is called as a urinary microalbuminuria. So this again is going to indicate that he or she also has a higher chance of having a heart disease due to diabetes. So in fact, most of the times, if you see, if we lose a patient with diabetic kidney disease to a heart attack or stroke. So, and since all these complications are interlinked, we need to look at the root cause of these problems. And then we need to treat the risk factor so that we can prevent both the micro as well as the macrovascular complications of diabetes. Thank you, madam. So nicely explained. So, can you just elaborate on, can hypoglycemia is also a risk factor for recurrent hypoglycemia can also be a risk factor for heart disease or cardiac arrest or heart attack in patients with diabetes? So, should our patients be also aware of hypoglycemia and avoid that as much as possible? Yes, that is very important because there is a link between hypoglycemia and cardiac disease. So hypoglycemia itself is a risk factor for developing cardiac arrhythmias. Like Dr. Lakshmi had, Nalini had mentioned earlier. So she said there could be fast heart rate. So hypoglycemia itself can precipitate something called as the cardiac arrhythmia. And sometimes in patients with autonomic neuropathy, they will not have the symptoms of hypoglycemia. So that again is an issue here. Thank you, ma'am. So our next question to Dr. Mohan sir. So can a diabetic patient with heart disease do exercise? And what are the type of exercises you recommend to these patients? Yeah, that's a very important pertinent question because जब हम इस point तक पहुंच चुके हैं, we have reached this point, so people will obviously ask us. So we are telling everyday exercise. Can heart failure person also do that? So हम caution we advise with caution because जब बोलते हैं exercise we cannot tell uniformly everybody should do in the uniform way. केस बेस्ड सिचुएशन में हम एडवाइस कर सकते हैं. जो एक्टिव हार्ट फेलियर में होता है उनको नहीं एडवाइस कर सकते हैं, बट बहुत सेडेंटरी हो जाए वो भी बुरा होता है. सो हमको बैलेंस करना पड़ेगा एक्टिविटी और सेडेंटरी का, बिकॉज इवन ब्रशिंग टीथ कैन ऑल्सो बी स्ट्रेन फॉर अ पर्सन विथ हार्ट फेलियर. जो हम देखते हैं, हम कार्डियक वार्ड में जो भर्ती होता है पेशेंट्स को, तो हमको उसको इवन ब्रशिंग द टीथ आल्सो मे बी अ ट्रेनिंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अ पेशेंट. आईसीयू में होता है तो नर्स को ही करना पड़ेगा वो सब कुछ पेशेंट के केयर करने के लिए. तो व्हाट आई एम टेलिंग इज अ स्टेबल कार्डियक पेशेंट हु हैज गॉन होम आफ्टर गेटिंग द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट लिया है हार्ट का पंप फेलियर के लिए, उसके बाद वो स्टेबल हो गया है. हम जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी पूछते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हमको बोलते हैं ओके ठीक है आप स्टार्ट कर सकते हो, उस टाइम पे ही शुरू करना है, बल्कि जल्दी से रिहैबिलिटेशन बोलते हैं उसको. तो कार्डियक फेलियर के बाद उसको रिहैबिलिटेशन करने के बाद ही उनको ट्रीटमेंट ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा. जो हमको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, because we have got ESI which is doing a lot of good activities. We have got International Pre-Diabetes Day prevention program. So many things we have done for our public. So you can see the previous videos. Last year आबा ने ही एक मीटिंग स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर वरुण शर्मा के साथ, हमारा जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर संजय बराड़ा सर के साथ एक अच्छा एक सेशन किया था. वो वीडियो हम शेयर कर सकते हैं आपसे. तो उस वीडियो में हमने बहुत एक्सप्लेन किया था. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज का. तो आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज का हमको बैलेंस करना पड़ेगा. जो हार्ट का रीमॉडलिंग होता है, जो हार्ट पंप फेलियर होने के बाद वो हार्ट रीमॉडल होता है, उसका एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना पड़ता है वो पंप ठीक करने के लिए. वो एक टेस्ट होता है BNP, ब्रेन नाट्रियोट्रिक पेप्टाइड. BNP एक टेस्ट है जो हेल्प करता है वो डिसाइड करने को डॉक्टर को कि किस लेवल के किस तरह उसका करना पड़ेगा. आप जब एक बहुत बिग क्वेश्चन बोला है, इसलिए आप 5 टिप्स देता हूं मैं पेशेंट्स को हार्ट फेलियर के टाइम पे जो हमको एक्सरसाइज करने के वेले में. फर्स्ट टिप है डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ. सो एक्सर्शन बहुत ज्यादा करने का वो भी मना है. सो 10 मिनट्स पर डे, इफ यू इंक्रीज इट पर डे इट कैन इंप्रूव, देन यू कैन टेक इट अप. जब डेली बोलते हैं 30 मिनट्स 45 मिनट्स एक्टिविटी, वो तक नहीं जाओ. स्टार्टिंग में 5 मिनट्स करो, 10 मिनट्स करो, ग्रेजुअली ट्रेनिंग ज्यादा करो.
उसको बोलता है हमको अभ्यास प्रशिक्षण, उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो शुड बी इन दैट टीम टू फर्स्ट। सेकेंड है वार्म अप एंड कूल डाउन बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। जो स्लोली कूल डाउन करना है वो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सडनली हमको जबकि सडनली स्टॉप नहीं करना है, ग्रेजुअली स्टार्ट करके बिल्डअप करके ग्रेजुअली कूल डाउन करना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट है बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। थर्ड है ट्राई एक्सर्टिंग लिटिल एंड ऑफन। जो हम बोलते हैं 5 to 10 मिनट करने हैं, जो ज्यादा ज्यादा करके करके स्प्रेड आउट करे। जैसे कि हम सुबह किया, दोपहर किया, शाम को किया, स्प्रेड आउट करके वो एक्सरसाइज एक्टिव। सेम सिचुएशन जेस्टेशनल डायबिटीज को, वो प्रेगनेंसी लेडीज को, उसको भी बोलता है हमको स्प्रेड आउट करो एक्टिविटीज को, जबकि जस्ट सेडेंटरी नहीं करो। फोर्थ एक्सरसाइज है डे टू डे उसको पेस करो। जो एक दिन नहीं किया प्रॉब्लम नहीं है, अगला दिन ज्यादा नहीं करने का, वो सेम टाइम पे सेम करोगे। फोर्थ है पेस योरसेल्फ डेली। और लास्ट टिप है कि फाइंड विच टाइम ऑफ द डे सूट्स यू। हमारा यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत धूप होता है, ड्यू होता है, समटाइम दे डोंट गो आउट फॉर दिस टाइम। तो एज ग्रुप के मुताबिक या उसका एज ग्रुप का नहीं, उसका रीजन के मुताबिक हमको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो 5 टिप्स मैं बोल चुका हूं, समराइज करता हूं। फर्स्ट है डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। सेकंड है वार्म अप एंड कूल डाउन बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। थर्ड, ट्राई एक्सरसाइजिंग इन अ स्प्रेड आउट मैनर, इन लिटिल एंड ऑफन मैनर। फोर्थ वन, पेस योरसेल्फ डेली, डे टू डे, ज्यादा मत करो एक दिन को, तो पेस आउट करो। और फाइनली फाइंड आउट विच टाइम ऑफ द डे विल सूट यू, बिकॉज केस बेस्ड सिचुएशन को होता है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। Yes, sir, very well explained, sir. Actually, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग सुबह सुबह लाइक एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, मतलब हेल्दी इंडिविजुअल्स, और थोड़े बहुत कुछ लोग डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, कुछ प्री डायबिटिक, सो अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। जिम के अंदर ही हार्ट अटैक होके बहुत सारे लोगों जिम को का नाम नहीं लिया, स्पॉट डेथ भी हुआ बट है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है। वो जब पेशेंट एडमिट होता है उस टाइम भी फिजियोथेरापिस्ट और हमारा ट्रेनर जो है, उस टाइम हमारा हॉस्पिटल में भी ट्रेनर होता है, तो फिजियोथेरापिस्ट इज आवर ट्रेनर। तो वहाँ पे ट्रेनर, स्पोर्ट्स मेडिसिन का लोग सब कुछ टीम में आके वो हार्ट, वो वहाँ पे इवन वी हैव गॉट मशीन टू कार्डियो पल्मोनरी जो है ना, वो प्रेशर देखने के लिए स्पायरोमीटर या वो फ्लो करने का डिवाइस होता है। तो जब लंग्स, फेफड़ी में थोड़ा पल्मोनरी एडीमा सब कुछ गया हुआ, वो लंग वॉल्यूम ओके है और कार्डियक पंपिंग भी ओके, उस टाइम पे फुल्ली जा सकते हैं। बल्कि वी शुड सी द इजेक्शन फ्रैक्शन, वी शुड सी द एंड्योरेंस फैक्टर। So many things are there beyond our discussion today. I think we have to take another session for this also. यस सर, वेरी वेल एक्सप्लेन। सो अगर किसी डायबिटिक पेशेंट्स को अगर हार्ट डिजीज ऑलरेडी है, ऑलरेडी नोन हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है, तो अपना हार्ट का जांच करा ले। अगर हार्ट फेलियर है तो डेफिनेटली इमीडिएटली हार्ट फेलियर के बाद एक कोई भी विगरस एक्सरसाइज ना करे। और अगर हार्ट फेलियर नहीं है और सिर्फ हार्ट डिजीज है, तभी भी अपना हार्ट का कंडीशन पहले जान ले कि उनका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है, हार्ट का स्टेटस कैसा है, और इसी के हिसाब से कोई ट्रेन पर्सनालिटी, ट्रेन्ड डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स है, उनसे सलाह लेके ही एक ग्रेजुअल जो ग्रेडेड एक्सरसाइजेस है वो करे, ना कि रैंडमली जिम में जाके एक्सरसाइज करे। उस हिसाब से बहुत बार क्या होता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन कभी कम रहने से आपको अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। और कभी भी एक्सरसाइज करें, अपना एक्सरसाइज करने के पहले ब्लड शुगर देखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग को शुगर कम होता है या बहुत ज्यादा होता है, तभी भी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट मोहन सर? थैंक यू सर। So we are coming to the last question of today's session. So my question to Dr. Nalini ma'am is, in a diabetic patient with heart problem, can they take all type of anti-diabetic medicines which are available? And if yes, then why? And if no, what are the precautions they should take? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आभा। हम बोलते हैं कि डायबिटीज का पैथोलॉजी में, माने द कॉजेशन ऑफ डायबिटीज में 8 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ओमिनस ऑक्टेट बोलते हैं। दवाइयाँ पूरे ये ऐसे इतने मैकेनिज्म्स के तरफ है कि ये सारे मैकेनिज्म्स को एड्रेस करते हुए थोड़ी दवाइयों के इस्तेमाल के वजह से हार्ट फेलियर के रेट्स बढ़ सकते हैं। लाइक थायोजोलिडीन डायोन्स बोलकर एक ग्रुप है, जो ग्रुप की दवाइयाँ अगर है, अगर हार्ट फेलियर सस्पेक्ट कर रहे हो तो ये दवाई का ग्रुप अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई शुगर्स बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं, लेकिन
उनके वजह से बॉडी का फ्लूइड लोड बढ़ जाता है, माने हार्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है जो पंप करना है। हार्ट ऑलरेडी थक गया है, फेल्योर में है, तो ये दवाई हम देंगे तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, ये सही दवाई नहीं रहेगी। सो ये ग्रुप की दवाइयाँ अगर हार्ट फेलियर ऑलरेडी है तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी नहीं देनी चाहिए। अगर हम दवाई बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है और अब जाके हार्ट फेलियर के फीचर्स नजर आ रहे हैं या डाउट है, तो तुरंत ये दवाई हमको बदल के कोई ऑल्टरनेटिव दवाई लेने की जरूरत होती है। सो थाइजोलिडीन डायोन्स मोस्ट कॉमन दवाई यूज हम करते हैं, अगर पायोग्लिटाजोल एक यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं एक ग्रुप, दूसरी दो ग्रुप ऑफ दवाइयां हैं जो कि हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं शुगर्स कंट्रोल करने के लिए, उनको हम बोलते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स। ये दवाइयों में दो दवाइयां ऐसी हैं जिनके वजह से शायद हार्ट फेलियर की वजह से एडमिशंस हॉस्पिटल में ज्यादा होते हैं। हार्ट फेलियर ज्यादा नहीं हो जाता है, सेक्साग्लिप्टिन एंड अलोग्लिप्टिन बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, लेकिन उनके वजह से हार्ट फेलियर नहीं होता है। सो इसीलिए जिन लोगों में ऑलरेडी हार्ट फेलियर है, ये दवाई सोच समझ के देना बहुत जरूरी है। और एक दवाई है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो है टेलीग्लिप्टिन। ये टेलीग्लिप्टिन भी बहुत अच्छी दवाई है, शुगर्स अच्छे कंट्रोल होते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़े दो लोगों में ये क्यूटी सिंड्रोम बोलकर एक क्यूटी सेगमेंट बोल के एक होता है ECG में, उसको प्रोलॉन्ग करने का रिस्क होता है, जिसकी वजह से एरिथमियास का रिस्क, माने हार्ट के रेट में एबनॉर्मेलिटी आने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये दवाइयाँ थोड़े केयर से लेने की जरूरत बहुत हो जाती है, स्पेशली जिन लोगों को हार्ट फेलियर की संभावना होती है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज थाइजोलिडीन डाउन्स में केयर बहुत बरतनी जरूरी है। सेकेंड थिंग इज DPP-4 इनहिबिटर्स। क्लिनिकल जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, कि बहुत ही कॉमनली यूज दवाई है और बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं ये सारी, लेकिन क्लिनिकल जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम हार्ट फेलियर की बात या कार्डियक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। और एक ग्रुप ऑफ दवाइयां ऐसे भी है, SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो कि डॉक्टर मोहन ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये दवाइयों का बेनिफिट जो है हार्ट के प्रति होता है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उन दवाइयों के जो कि हार्ट फेलियर में थोड़े सावधानी से दे रहे हैं या बिल्कुल नहीं देने। ये अब ये दवाइयों की ग्रुप ऐसी है SGLT2 रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स की, इनका बेनिफिट जो है वो हार्ट के प्रति होता है, ना सिर्फ ग्लूकोज के प्रति, हार्ट के प्रति, किडनी के प्रति, ब्लड प्रेशर के प्रति होता है, जिसकी वजह से बेनिफिट होता है। तो ये दवाइयों का माइंड में रखना एंड क्लिनिकल जजमेंट इनको इस्तेमाल करने में बहुत ही जरूरी है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो मूविंग, हम लोग का ऑलमोस्ट टाइम अभी समाप्त हो चुका है। We are almost to the end of the session, so I would request all the panelists to give a take-home message on today's topic about heart and diabetes mellitus. We'll start with Dr. Ashok sir. Thank you, Abha. It was a very nice discussion with active participation from all the panelists. Just to sum up, we should, as Dr. Mohan has said, that heart disease in diabetes is not uncommon, but our aim is not to make you, scarce about the situation. We should just think that it may happen in our in a diabetic patients. We should be very vigilant all throughout our life, and we should keep on checking the parameters like blood glucose, blood pressure, cholesterol, and we should lead a healthy lifestyle with exercises, good food, avoid smoking, moderate amount of alcohol consumption. These are the very pertinent steps to prevent development of heart diseases. And once heart disease develops, this is not the end. Just it is the beginning to become more stringent and more, cautious to your health. Follow your doctor's advice, because as they have advised, take all the medications, take regular checkup. Don't add or omit any medications without advice of your doctor. That is the most important thing. Don't fall prey of some alternate things. Your doctor is the best guide for you. Thank you. Thank you, sir. Beatrice ma'am, would you give a take-home message for our audience? Thank you, Dr. Abha. We really enjoyed the discussion. So we've been discussing over the past 1 hour about how important or what an important risk factor diabetes is
in the development of heart disease. So first and foremost, I think we should screen regularly for diabetes. So that is the most important risk factor. So especially when you're 35 years or older, when you have family history of diabetes, and when you already have high BP, hypertension, or when you have cholesterol issues, then I think we should screen ourselves regularly for diabetes. And if detected with diabetes, we should get treated and be compliant to the medications so that can prevent both the micro and the macrovascular complications of diabetes. Thank you, madam. Mohan sir, ma'am, your take off my message, Yeah. sir. Yeah. So thank you, Abha, and thank you all panelists for getting excellent talk and discussion. So मैं जो ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ ये कि हमको ये सेशन अवेयरनेस जो करते हैं रेगुलरली होता है, एवरी वीक वी आर डूइंग इट फॉर सो मेनी टाइम. तो ये इसका मकसद है कि पेशेंट को जागरूकता बढ़ाने का और समझाने का, बिकॉज आर डॉक्टर्स आर स्पेंडिंग सो मच. सिस्टम होता है कि हमारा डॉक्टर्स को 10 मिनट 5 मिनट की उतना ही टाइम मिलता है. ये प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ज्यादा टाइम मिलता है इंटरेक्शन करने के लिए, और आप रिवाइंड भी कर सकते हैं प्रीवियस एपिसोड्स के लिए. जो ये एपिसोड्स में मैं बोलना चाहता हूँ ये कि डायबिटिक मरीजों को हार्ट फेलियर होने का रिस्क है, ज्यादा नहीं है बट इट इज देयर. और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के बावजूद भी उसको कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकता है, वो फैमिलियल की तरह से, और वो या एक्सरसाइज नहीं करने का और स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा होता है. over anxiety or over excitement or over training or everything will be over will also bad, also less is also bad. So उसको moderation में करने का बहुत important होता है. Just one small mnemonic for you, act now. तो वो हमारा मीटिंग का प्री डायबिटीज डे का स्लोगन था act now. तो वो बोलता है एक्शन चेंजेस द थिंग्स. तो जो भी हम कर सकते हैं वो एक्शन के जरिए कर सकते हैं, अवेयरनेस के जरिए कर सकते हैं, और हम जो कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत ज्यादा थिंग्स को करना चाहिए. इसलिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट. थैंक यू. Thank you, sir. Very nice message. So, Nalini ma'am, like your take-home message for our audience. Thank you so much initially, Abha, for this very essential awareness session. And my colleagues have aptly summarized the points. I'd like to add that identification, समझना ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के वजह से हार्ट का प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं. ये रियलिटी है और इसमें डरने की बात नहीं है, समझने की बात है कि हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है, और वो सिम्टम्स को जाने अगर होते हैं और एक्ट, जैसे डॉक्टर मोहन ने बताया है, एक्ट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझिए, नॉलेज इज द थिंग विच कैन रिमूव द ignorance. Knowledge is the one which will lead you to a better health. And with that knowledge, apply these things which you have learned from your doctor, and apply the physical activity parameters, control your diabetes, and stick to the prescription. Review your prescriptions. If you are facing an issue, discuss it with your doctor, and then act now and prevent diabetes and diabetes related heart diseases. Thank you, Nalini ma'am. Thank you, respected panelist, for such a wonderful session today. और ये जो आज का सेशन है वो हमारे पेशेंट्स के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए जो डायबिटिक है और जो नॉन डायबिटिक है सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और लाभदायक होगा, क्योंकि सभी को जानना होता है कि हाँ डायबिटीज़ एंड हार्ट के बारे में. और जैसे डॉक्टर मोहन ने बोला है कि हाँ एक्सरसाइज कैसे करना है, कितना करना है, उसके आगे के प्रिकॉशंस, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सभी ऑडियंस को जाना चाहिए. और जो भी सिम्टम्स है, जैसे ऑलरेडी डॉक्टर नलिनी ने बोला है क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, डॉक्टर बीएट्रिस ने जिन्हें अच्छे से बोला है कि जैसे हार्ट फेलियर का क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और जैसे डॉक्टर अशोक ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि क्या क्या हार्ट डिजीजेस डायबिटीज़ में है. हार्ट डिजीज डायबिटीज़ में सबको नहीं होगा लेकिन हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है ये बहुत ही अच्छे से हमको समराइज करके इसी 1 hour पीरियड में हमको बताया है. So thank you all panelists on behalf of Endocrine Society of India. This is initiative by Endocrine Society of India awareness program on the Facebook. So we are coming every week on a Saturday at the same time for 4:30 p.m. From 4:30 p.m. to 5:30 p.m. always with a new topic. This month we are actually dedicating our discussion on to hormone problems and hormone problems and the heart disease.
the impact of hormones and the heart. So next week on Saturday, we will be coming with thyroid hormone disorders and heart problems. So stay tuned with us and join us on the next week. Thank you all respected panelists, and thank you so much. Thank you. Thank you, Abha, and thank you, ESI. Thank you.